Hello, student. Good morning. How are you all? I hope you are fine and healthy. Okay, so today we will study fifth chapter, A Pact with the Sun. Fifth chapter, Tansen. You can see in the picture. Okay, and this is his tomb, जिसको समाधि कहते हैं वो. It is in Gwalior, Madhya Pradesh. He was a great singer, and his nickname was Ramtanu, or he was a prominent figure of Hindustani classical music. So you may have heard of name Tansen, the greatest musician, as he was musician of our country has produced him. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. His father name was Mukundan Mishra. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड एंड ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता का इकलौता वो बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज नोटी चाइल्ड एंड इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज वेरी नोटी. हु? तानसेन. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. He used to run into the forest and here he learned to imitate. Imitate means copy करना. किसको वो copy करते थे? Perfectly calls of birds and animals. तो उसको birds और animals के sounds भी निकालना आता था, वो भी perfectly, because वो जंगल में बार बार भाग जाते थे. Often run away to the फॉरेस्ट टू प्ले, खेलने के लिए वहाँ पर जाते थे. एंड ही लर्न देयर टू इमिटेट द परफेक्टली कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. So one day what happened, एक incident बन जाता है. Swami Haridas and some of the disciples. वो Swami Haridas was guru and disciple means उसके जो शिष्य होते हैं उसको disciples कहते हैं. So they were tired. And the group settled down to rest in City Grove. Grove, it means group of trees. Tansen saw them when they were passing through the forest. Who were passing through the forest? Swami Haridas and his disciple. And here in the forest they got tired and they decided to take the rest under the shady grove. कुछ बहुत सारे पेड़ थे, उसके बीच में उसने रेस्ट लेने का सोचा. And Tansen saw them. तानसेन ने देखा कि Swami Haridas and disciples resting there. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को कहते कि अरे ये नए हैं लोग. He hid behind a tree and roared like a tiger. So he wanted to make fun with them. So he hid. Hid means छुप जाना. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered. Scattered means ran away here and there. They spread themselves in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he called. Tigers are always not dangerous. Let us look for this one. So here when the disciples started panic, so Swami Haridas ने कहा कि no need to afraid because tigers are not always dangerous. tiger जो होते हैं हमेशा खतरनाक नहीं होते. just look at them. उसको देखते ही कि कहाँ पर है. suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. किसी ने देख लिया कि it was not a tiger but ये बच्चे की मजाक थी. There are no tigers here, master, he said. Only his naughty boy. So one of the disciples said that there was no tiger but this was done by this naughty boy. कि ये लड़के ने हमारे साथ मजाक किया है. Swami Haridas did not punish him. Here that boy made fun with them, but though Haridas did not punish that boy, he went to Tansen's father and said, he is also very talented because he was able and he could imitate the copy and exactly perfectly copy of the birds and animals. I think I can make him a good singer. So Haridas told his father that he can make him a good singer. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. So his father मुकुंदन मिश्रा जो थे उसने परमिशन दे दी. इन दिस वे हरिदास टुक तानसेन with him and at that time Tansen was only 10 years old boy.
He lived with him for 11 years. Okay, so 11 for the 11 years he learned his singing, learning music and become a great singer. So during these 11 years he learned music and became a good singer. At about this time his parents died. ओके उस वक्त उसके पिता जो थे, उसके पेरेंट्स माता पिता जो थे वो मृत्यु हो गई उसकी. ड्यूरिंग दिस ईयर्स मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghosh of Gwalior, but his father's last wish, dying wish और मरते वक्त की जो इच्छा थी, his son should visit the king Muhammad Ghosh of Gwalior. मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, वो एक अच्छा राजा भी था. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम and often visited him, and here Mukundan Mishra also visited that king Muhammad Ghosh many of times, and that is why his last wish or dying wish was that his son should visit him. While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. So he often visited the court of Rani Mrignani, and Rani Mrignani was also a great musician. There he met and married one of ladies of the court. Her name was Hussaini, and here he met one lady. His name was Hussaini, and she was also a great musician. हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसेपल्स, और हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical, and they had 5 children, and all the 5 children were musical. It means that कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ जुड़े हुए थे. Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor, and here he became the favorite of the emperor. Emperor means राजा, जो अकबर का वो फेवरेट हो गया. और कहा जाता है कि जो राजा के दरबार में, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक ये तानसेन भी थे, बीरबल की तरह. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Akbar was fond of music, and any time he could call Tansen to sing. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice, and whenever Tansen do practice of the music, so जब वो म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे तब ये often visit, मतलब अकबर राजा उसके घर पर उसको सुनने के लिए भी जाते थे. He also gave him many presents, और उसको खुश होकर प्रेजेंट भी देते थे. So some of the courtiers became jealous of Tansen, and other courtiers were there. Courtiers means the member of the court or member of the king's दरबार, उसकी कोर्ट में जो अदर मेंबर्स होते they become jealous. Jealous means ईर्ष्या करते थे. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, and they decided वो कब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो जो ये तानसेन है उसको ruined means destroy, उसको बर्बाद ना कर दे. They declared. One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. Shaukat Mian, who was another courtier, and he had a great idea. Let us make him sing Rag Deepak, he said. And Shaukat Mian said that let him sing Deepak Rag. वो राग दीपक उससे गाया जाए. Then other courtiers asked him how will help us, कि वो राग दीपक गाएगा तो हमको कैसे हेल्प मिलेगी. If Deepak Rag is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. And here Shaukat Mian said that कि अगर वो राग सही से गाया जाए तो जो है वो हवा गर्म हो जाती है और सिंगर को जला देती है और दिए भी जल उठते हैं. Tansen is very good singer. If he sing Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. So Shaukat Mian said that Tansen is a good singer, and if he will sing Deepak Rag, he will burn to ash, कि अगर वो अच्छे से गाएगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, और ये भी कहते हैं कि ओनली ग्रेट सिंगर जो होते हैं वही वो राग को गा सकते हैं. एंड तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड. सो अकबर जो शौकत मियां अकबर के पास जाते हैं
कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। वो कहते हैं कि अकबर को थोड़ा पिन करते हैं कि वो एक अच्छा सिंगर नहीं है, अगर अच्छा सिंगर है तो उसको राग दीपक जो है गाया जाए। ओनली राग दीपक द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो ग्रेटेस्ट सिंगर होते हैं वही राग दीपक गा सकती है। तो अकबर क्या कहते हैं, ऑफकोर्स तानसेन कैन सिंग इट वेरी वेल। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। येस, अकबर सेड आस्क्ड तानसेन टू सिंग राग दीपक, बट हियर तानसेन कुड नॉट डिसोबे, वो डिसोबे नहीं कर सकेगा। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गेव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन कहती कि ओके माई लॉर्ड, बट ही ऑल्सो डिमांडेड सम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, कि कुछ उसको समय दिया जाए प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, घर पर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। डाउनकास्ट मीन्स वेरी सैड, उसके जीवन में कभी वो इतना सैड नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट सेट द लैम्प्स, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसीज। ही टोल्ड हिज वाइफ कि राग दीपक सिर्फ दिया तो नहीं जलाएगा, उसको भी जलाकर खाक कर देगा। Then he had an idea. If someone sing rag Megh at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupvati could do it, he said. Then he had idea that during this time, if दीपक राग गाया जाता है और गर्म हवा होने लगती है, कोई अगर राग मेघ गाए तो बारिश होती है। एंड ही वॉज अश्योर अबाउट हिज डॉटर नेम वॉज सरस्वती, एंड उसकी एक फ्रेंड थी रूपवती। सो बोथ गर्ल्स वर एबल टू सिंग राग मेघ, और उसको पता था कि दोनों बेटियां जो है वो राग मेघ गाएगी तो बारिश आएगी। ही टोल्ड द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन दोनों को ट्रेनिंग भी देते हैं। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks। इन दिस वे रूपवती एंड सरस्वती प्रैक्टिस्ड डे एंड नाइट एंड दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व वेरी वेल। Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. So Tansen also उसको कहते हैं कि they have to wait until the air becomes hot and दीपक started burning, कि कब तक उसको वेट करनी पड़ेगी, जब तक वो हवा गर्म होती है और दिए जलने लगती है तब तक। द लेजेंड गोज, एक ऐसी कथा भी कही जा रही है। द लेजेंड गोज दैट अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, और द डे हैड कम, दिन भी आ गया। मैनी पीपल वर गैदर्ड देयर टू लिसन टू हियर द राग दीपक। When he began to sing, the air became warm. As he started to sing Rag Deepak, the air started becoming warm. Soon people in the audience were bathed in perspirations, and here people were getting wet in perspiration. Perspiration means pashina aana. They were getting sweat. The leaves on the trees dried up and fell to the ground as the air became hot. The leaves on the tree started dry and fell on the ground. As the music continued, the birds fell dead because of the heat, and the water in the river began to boil. Okay, so birds started fell on the ground, वो भी ग्राउंड पर गिरने लगी, एंड डेड, क्योंकि वहाँ पर हवा जो थी वो गर्म होने लगी। इवन द वाटर इन टू द रिवर स्टार्टेड बॉइलिंग, नदियों का पानी भी बॉयल होना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। सो हियर पीपल साउटेड एज इट वॉज टू मच हॉट, और जो लोग थे वो भी एकदम से परेशान होने लगे। एंड हियर जो दिए थे वो जलने लगे। क्यों दिए जलने लगे? क्योंकि जब राग दीपक गाया जाता है तब जो दिए होते हैं वो खुद ब खुद जलने लगते हैं। इट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, एंड as the diya starts, as the lamp started lightening, Saraswati and Rupvati started to sing Rag Megh. The sky clouded over and rain came down, and in this way the rain came down. Tansen was saved, और तानसेन जो है वो बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, एंड अकबर वॉज वेरी sorry that he had caused him so much suffering, and after that
तानसेन जो है कुछ दिन के लिए बीमार भी हो गए एंड अकबर फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दैट ही टोल्ड तानसेन टू सिंग राग दीपक, उसके लिए बहुत उसको सॉरी फील करते हैं। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज एंड ही पनिश्ड हिज एनिमीज, अकबर राजा जो है वो उसके एनिमीज जो थे उसको पनिश भी करते हैं। व्हेन तानसेन गोट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, रिजॉइस मीन्स फिर से खुश हो जाना, हैप्पी अगेन। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died in 1585, तब तक वो he was one of the greatest member and the courtier of the court. He composed several new राग, और उसने कुछ नए राग भी कंपोज किए हुए थे। तानसेन्स tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians and some whoever the musicians are there. जैसे हम भगवान को मानते हैं तो मंदिर में जाते, तो म्यूजिशियन जो होते हैं म्यूजिक में मानते हैं एंड दे ऑफन विजिट द टॉम्ब ऑफ तानसेन विच इज़ इन ग्वालियर, ग्वालियर में उसकी टॉम्ब भी है। So when I started the chapter, I have shown you that tomb which is in Gwalior and pilgrimage. Pilgrimage means यात्रा, जो कुछ म्यूजिशियन होते हैं जब यात्रा पर जाते हैं तो इसकी टॉम्ब को वो विजिट भी करते हैं। स्टूडेंट, देयर इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ तानसेन, ओके। उसका नाम है रामतनु पांडे, 1493 और 1500, Gwalior which is in Madhya Pradesh, died in 26 April 1586 at the age of 92-93 or 25 April 1589 age of 95-96। ये जो उसकी करेक्ट डेट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ये डेट या तो ये डेट, ओके। सो हियर इट इज़ अ जनरस की बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ऑक्यूपेशन म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, vocalist, music studies, okay। Now let's talk about the question. Why did Swami Haridas say Tansen was talented when they were taking rest under the shady grove? At that time Tansen frightened them by the roaring of tiger, and when Haridas saw that he has a talented boy, he said that when he has talent to copy the other animal and bird in a perfect way, at that time Swami Haridas could say that he was a talented boy. Why did Akbar ask Tansen to join his court? Okay, as Tansen was fond of music, okay, तो उसने जो अकबर थे उसके फेवरेट भी हो गए थे, and that is why he asked him to join his court. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give 2 reasons. He had given him many presents, उसको बहुत सारे presents भी दिए थे, this is the first reason, and he often visit Tansen when he do practice at home, उसकी घर पर भी जाते थे उसको सुनने के लिए। So these are the 2 reasons, then we can say that Akbar was fond of Tansen. Why did the other courtiers feel jealousy about Tansen? तो उसको ऐसा लगता था कि What did the other courtiers feel about Tansen? तो दे क्या फील करते थे वो, तो they feel jealous about the Tansen. Now question number 5. What happens if Raga Deepak is sung? If Rag Deepak is sung properly, it will the air will become hot and जो पानी जो होता है वो बॉईल होने लगता है एंड लाइट जो होती है वो जलने लगती है। सो Rag Deepak, when sung it properly, these things happened. Why did Tansen enemies want him to sing the raga? So Tansen's enemies were jealous of him, and he knew that if Tansen will sing Rag Deepak, he will burn in ashes, वो जलकर खाक हो जाएगा। Question number 6. Why did Tansen agree to sing Rag Deepak? Because he could not disobey King Akbar. Question number 7. What steps did he take to save himself? Yes, he taught his daughter Saraswati and her friend Rupvati Rag Megh. So in this way कि जब वो राग दीपक जब गाया जाएगा तब ये राग मेघ बोलेंगे सिंग करेंगे, then he could save himself. Now last 7 का second. Did his plan work? How? Yes, his plan had worked. When he sung Rag Deepak, birds died,
The leaves of the trees dried and fell on the ground. The water into the river started boiling. और जब लैम्प जो होते started lightening at that time, these two daughters sang rag Meg, and in this way he was able to save himself. So student, you have to write these 7 question and answer in your homework book.